Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. So, we'll start with the technical and derivatives outlook for today. So, after 2 days of positivity, Nifty yet again witnessed bearishness on the weekly expiry day yesterday. The index faced selling pressure from the previous day's high, but overall it managed to hold on to 19,300 levels. As of now, if we see Nifty is trading within the range of 19,300 to 19,650. If we speak about Nifty futures, it saw a short build up yesterday to the tune of 3.47% and a rise in the open interest by 9,019 contracts. Call ratio dropped from 1.11 to 0.87, while on the options front, 19,500 and 19,400 were the strikes that witnessed call writing additions. So this somewhere indicates a shift in resistance on the downside. At the same time, put buying can also be seen at 19,300 strike, which indicates a bearish bias going into today. Coming to Bank Nifty, the index too traded with a bearish bias yesterday as it again faced a rejection from 44,000 levels. The index continues to trade within the broader range of 43,500 to 45,000. At the same time, 44,000 is one level which is acting as a short term hurdle for Bank Nifty. Coming to the futures data, Bank Nifty futures witnessed a short build-up yesterday to the tune of 5.56%. There were additions in open interest by 8,641 contracts, while the put call ratio declined from 0.84 to 0.74. According to the options data, 44,000 strike again was one which witnessed highest OI in terms of both call writing as well as put writing. So the overall setup is somewhere indicating some choppiness in the market going into today, or choppiness in Bank Nifty precisely going into today. If we speak about some stocks and sectors, yesterday overall all the sectors closed in red except PSU banks, which provided some strength to the market. At the same time, consumer durables is one sector that looked good, including stocks like Bata India, Rajesh Exports, and Kajaria Ceramics. At the same time, some stocks to watch out for today from a positive perspective would be Birlasoft, REC Limited, and Titan. Coming to the FIIs and DIS data, in the cash market, FIIs did a selling of 1,510.86 crores yesterday. DIS too sold worth rupees 313.97 crores. Coming to the futures data, some stocks which witnessed long build-up are Bata India, Escorts, and Birlasoft, while some stocks that witnessed short build-up yesterday are Syngin, Kotak Bank, and Reliance. So this was all from my end. Now I'll hand it over to Bhavesh sir for further updates. Yeah, hi, good morning, team. So, an update on Bata. So, Bata and Adidas are in a advanced stage of strategic talk regarding, uh, merging. Um, uh, are in talks in strategic partnership where they will, where Bata will sell Adidas's shoes. So, Bata India is diversifying its portfolio with premium brands. The brand which was once only for affordable was known for affordable offerings is now seeking wider audiences. So this shift shows brands evolution from catering to budget conscious customers to attracting people with the taste for higher end selections. So after partnering with Adidas, Bata will be able to add more premium products under its roof, and it's positive for the company. And we have a buy rating on the stock and target price of 1900. So that's it on the fundamental side. Now I hand over to retail team. Thank you, sir. Good morning, everyone. Few updates from my side. First update on telecom sector. So, Bharti Airtel, Reliance, and Vodafone Idea. So, Union Minister Ashwin Vaishnaw today said that the government has made a police verification of SIM card dealers mandatory and discontinued the provision of bulk collection to the curb fraudulent activities. So now police verification is a mandatory. So the penalty of rupees 10 lakh will be imposed on dealers found violating the norms. And he said that the 10 lakh SIM dealers, they will be given a sufficient time for the police verification. The next update on IOCL.
The Haryana government has accorded the approval to acquire 349 acres of panchayat land for three adjoining villages, Asan, Kalyan, Khandara, Baljatan, for the expansion of Indian Oil Corporation Panipat refinery. The decision was taken in the meeting that Chief Minister Manohar Lal Khattar. According to the statement, IOCL will acquire 140 acres of Asan Kalyan village, 57 acres of Khandara, and 152 acres of Baljatan village. So, in the addition to the land cost, the refinery will separately pay 10 lakh per acre for development works in the village. The next update on South Indian Bank, the Reserve Bank of India yesterday approved the appointment of PR Sastreduri as the Managing Director and CEO of South Indian Bank for the period of 3 years with the effective from October 1st, 2023. According to the statement of South Indian Bank, PR Seshadri is an accomplished banker with experience of spanning multiple businesses, functional lines, and geographies. So he has experience in enterprise level management and in the management of all key commercial banking business lines. Next update on LTI Mindtree that AFL incorporated the supplemental insurance provider based in the US has chosen LTI Mindtree as its digital transformation collaborator for the modernization of application and migration to the cloud, according to the reports. So basically, this partnership aimed to revamp Affleck existing application using cloud first strategy in cooperation with Amazon Web Services, and the focus is on the enhancing performance efficiency, cost effectiveness, and operational excellence, and all while prioritizing heightened security measures. The next update on Imami. Imami Group aims to complete sale of MRI hospital this month to Manipal Group is about 2,400 crore as per the report by Economic Times. So the report is setting the industry executive said that the around 1,650 crore of the proceeds of the deal will be utilized for serving the existing debt of MRI hospital. And according to the report by Money Control in this February this year, Manipal Group has hiked its offer 1,800 crore to the buyout Kolkata-based Imami Group's hospital business, MRI Hospital. The next update on dairy segment. So strong demand, value-added products, and stable milk consumption will lead to 14 to 16% revenue growth for India's organized dairy industry this fiscal. So with the raw milk supply improving, there will be a fewer price hike and profitability will recover 20 to 50 basis point as per the rating agency CRISIL. So last fiscal disruption in raw milk supply had to lead the multiple hikes in retail milk prices and pushing up the top line by 19%, but the impacting profitability. So dairy stock will be in the focus. Then SJVN, the SJVN Limited has inked two pacts with Punjab State Power Corporation Limited, basically to supply 1,200 megawatt of solar power from its project. So Punjab Chief Minister Bhagwant Mann said that the Satluj Jal Vidyut Nigam signed two power purchase agreement, that PPAs, for 1,200 megawatt solar power recently, and that PSPCL had floated tenders for procurement of power from solar project located in Punjab and other parts of the country. The next update on Axis Bank, the RBI has approved appointment of Subrat Amonoti as executive director of the bank for the period of 3 years with effective from August 17. The next update on ONGC, to transform into low carbon energy player, ONGC is investing around 1 lakh crore by the end of this decade as per PTI report. Then next update on GSW Steel is looking to form a consortium of BEAT for the majority stake in a tech resources steel making coal business. Then power stock update that Indian experienced a new peak in a power demand, reaching record 233 gigawatts on Wednesday due to the rising temperature as the monsoon retreats across the country. So power demand is projected to remain elevated until October. Experts believe that prolonged hot weather would keep the electricity demand pushing up.
So this would drive demand for a coal. Then next update on Carbonundum and Idea Forge. Carbonundum Universal engaged in manufacturing of abrasive and industrial ceramics has collaborated with drone maker Idea Forge Technology, basically to jointly develop products to make drones lighter and stronger and more durable. So they both are doing joint venture. Then Adani Transmission, that Adani Energy Solution, formerly known as Adani Transmission, announced the acquisition of under development of transmission project from Mega Engineering and Infrastructure, and the amount is undisclosed. Then next update on IRCON and RCF. The Department of Public Enterprises is considering proposal of upgrade status of RCF and IRCON to Navratna, which will enable companies to have more autonomy in terms of investment, setting up joint ventures, and other financial decisions. So both RCF and IRCON are currently categorized under Mini Ratna Category 1 and Schedule A status. Then next update on Maruti Suzuki. Maruti Suzuki is doubling down its plan to become the vehicle of choice for a more urban and affluent India. So the new Delhi headquarter automaker will open 57 Nexa showrooms, its premium outlet by March 2025, as the demand of its top-end vehicles continue to increase. So senior executive officer said yesterday that currently there are 468 Nexa outlets in the country. So they will increase 57 more, and with the first one open in Dwarka, New Delhi in July 2015. Then next update on TRF, the Tata Steel will hold meeting of its equity shareholder on September 18 to consider TRF merger with Tata Steel. Then Network 18 expand its connected TV reach, bring 4 new channels to Samsung TV Plus India. Then Jain Irrigation Company has received board approval for short and medium term fundraising for the meeting of various obligations. Then Piramal Pharma right issue of the pharmaceutical giant raised around 1050 crore was oversubscribed by 1.27 times. Then Reality Autumn Investment and Infrastructure Limited yesterday picked up a 1.9% stake in real estate developer. The next update on Sula Vineyards. During the extended weekend of August 20 to 14, the winemaker posted its highest ever revenue. Then Yatharatra Hospital Company reported 73% growth in its net profit, around 19 crore for the quarter one financial year 24. Then Adani Energy Company, next update on Axis Bank launches 2 products under RBI Innovation Hub for easy credit. Then NTPC Company has executed its business transfer agreement with its subsidiary NTPC Mining for having of coal mining business. Then there is a Nifty Next 50 inclusion stock. So in that, Page Industry, SGFC, AMC, ACC, Indus Tower, Nika to be excluded from the Nifty Next 50 index. And there is a Nifty Next 50 inclusion. So in that, PNB, TVS Motor, Shriram Finance, Trent, Zydus Life will be included in Nifty Next 50 with the effect from September 29. Then Reliance Industry, the recently demerger unit Geo Financial Services is set to be removed from the FTSE indexes. That's it from my end. Now I will hand over to Brijesh sir for Hindi convention. Thank you and over to you, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी एक कॉल का हम एक बार हिंदी में कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बाटा की न्यूज़ के साथ। बाटा में एक अपडेट आया है कि वो शायद एडिडास के साथ उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके चलते क्या होगा कि बाटा इंडिया जो अभी स्लोली स्लोली प्रीमियम सेगमेंट में जैसे वो अपने प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, तो ये काफी पॉजिटिव होगा अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एडिडास के साथ इनका टाइप होता है। तो बेसिकली ओवरऑल टाटा पे हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये काफी स्ट्रॉन्ग बेट है। तो हमें लगता है कि स्टॉक काफी अच्छा पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा जो इसका जो टारगेट प्राइस है 1900 के करीब है। तो अगर इसमें कुछ तो करेक्शंस भी आते हैं तो हम री रेटिंग करेंगे।
बट देन ओवरऑल अगर हमें लगता है कि ये जो भी न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं बाटा के ऊपर वो काफी पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ये टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इन्होंने बताया है कि ये जो डीलर्स होते हैं जो सिम बेचते हैं उनको आज अभी अब से उनको पुलिस वेरिफिकेशन करना काफी जरूरी होगा, क्योंकि काफी सारे डीलर्स बहुत सारे सिम्स अनऑथराइज इसमें से बेचते हैं और इससे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन्होंने बताया है कि जो भी डीलर्स पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे उनको करीब करीब 10 लाख के करीब पेनल्टी भी बनने को आ सकता है। अभी के डेटा के हिसाब कम से कम 10 लाख सिम डीलर्स है, और उन्होंने बताया कि उनको इनफ टाइम दिया जाएगा ये पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए। तो एक उन्होंने सिम सिम के रिलेटेड में गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया हुआ है। आईओसीएल के ऊपर एक अपडेट है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक करीब 349 एकड़ लैंड एक्विजिशन किया है। ये बेसिकली 140 एकड़ लैंड आसान कलान विलेज में है, 57 एकड़ खांडरा में है, 152 एकड़ बाल जतन विलेज में है। ये है ये उनके जो लैंड एक्विजिशन है, ये बेसिकली ये आईओसी के एक्सपांशन के लिए, पानीपत रिफाइनरी के एक्सपांशन प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ है। और तो ये एक स्टॉक वॉच लिस्ट में शायद देखने को मिल सकता है। उसके बाद साउथ इंडियन बैंक के ऊपर अपडेट है। तो आरबीआई ने पीआर शेषाद्री को ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ द साउथ इंडियन बैंक अप्रूव किया अगले 3 साल के लिए। ये इफेक्ट होगा 1 अक्टूबर 2023 से। सो एक पॉजिटिव न्यूज रहेगा। इमामी ग्रुप के ऊपर अपडेट है कि वो शायद ईएमआई हॉस्पिटल के जो सेगमेंट है वो मणिपाल ग्रुप को बेच सकते हैं 2400 करोड़ के आसपास। इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल आया था। तो इसके अलावा उनके एग्जीक्यूटिव ये भी बताया कि उन्होंने 1650 करोड़ के जो डील है वो ऑलरेडी प्रोसीडिंग में है। तो ये भी इमामी के ग्रुप के ये जो एक स्टॉक है इस पे भी हमें शायद एक वॉच रखना पड़ेगा। ये दूधला डेयरी, हडसन एग्रो, उमंग डेयरी, तो बेसिकली ये डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर हमें देखा गया था कि स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला। 14 to 16% के रेवेन्यू ग्रोथ देखा था हमने फिजिकल ईयर में। और इसके चलते ही हमें लगता है कि इसमें जितने भी जो प्राइस है प्रॉफिटेबिलिटी जो रिकवरी है उसमें 20 to 50 बेसिस पॉइंट से हुआ है। एक क्रिसिल जो रेटिंग एजेंसी ने उन्होंने ये डेटा अपडेट किया हुआ है, तो हमें लगता है कि इससे चलते उसका टॉप लाइन 19% से ग्रोथ होने के चांसेस हैं। और एक पावर स्टॉक्स के ऊपर एक अपडेट है जहाँ पे बताया गया कि शायद इंडिया का जो पावर डिमांड है वो शायद रीच करेगा 223 गीगावाट के करीब। क्योंकि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो काफी सारे हीट हीट जो बोलते हैं वो काफी सारे हाई डिमांड इस पे राइस हो रहा है। तो फिर और मानसून का भी इतना ज्यादा ये नहीं दिख रहा है, तो शायद पावर डिमांड जो है काफी ज्यादा रहेगा अक्टूबर तक। तो हॉट वेदर बेसिकली एनवायरमेंटल रिलेटेड है, तो हमें लगता है कि इसके चलते जो कोल इंडिया है, कोल के जो स्टॉक्स है उस पर काफी ज्यादा फोकस रह सकते हैं। इरकॉन और आरसीएफ के ऊपर एक अपडेट है जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने बताया कि वो शायद आरसीएफ एंड इरकॉन को अपग्रेड करेंगे रन ये सेगमेंट में। तो बेसिकली इससे क्या होगा, कंपनी को काफी सारी इजीली इन्वेस्टमेंट्स और जॉइंट वेंचर्स और अदर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए काफी सारे इजी होगा। तो इरकॉन और आयर आरसीएफ पे एक वॉच लिस्ट रखना चाहिए। मारुति सुजुकी के ऊपर अपडेट है। तो उन्होंने बताया कि उनके जो प्रीमियम सेगमेंट के जो व्हीकल्स में जो ग्रोथ देखने को मिले, तो उसके चलते उन्होंने प्लान किया है कि 57 नेक्सा शोरूम्स नए ओपन करेंगे। प्रीमियम आउटलेट्स होगा ये बाय मार्च 2025 पे। जबकि हमने देखा था कि फर्स्ट उन्होंने आउटलेट द्वारका न्यू दिल्ली में 2015 जुलाई में ओपन किया था। इसके चलते आगे मार्केट पे जरा बात कर लेते हैं। तो मार्केट में हमने कल फिर से देखा कि वहां पे एक थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट के करीब नीचे गिरा। हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी जब तक 19,300 के लेवल को होल्ड कर रहा है, हमें ये उम्मीद है कि शायद थोड़ा सा बाउंस बैक ट्रेंड मिल सकते हैं। बाउंस बैक भी हम 19,600 से 19,700 के रेंज पे ही देख रहे हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि फिर से थोड़ा रेजिस्टेंस मार्केट में आएगा।
हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में अगर 19,300 का लेवल ब्रेक कर जाता है और वो उसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वो फिर से 19,000 या फिर 18,800 के लेवल को छू सकती है। तो हमारा व्यू काफी कॉशियस है, हम पॉजिटिव व्यू फिलहाल एग्रेसिव पॉजिटिव व्यू लेके नहीं चल रहा है। अगर हमारा ये कॉशियस व्यू चेंज होता है तो डेफिनेटली हम ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स में हम ये अपडेट करेंगे। वही अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते तो बैंक निफ्टी ने हमने देखा कि रिसेंटली 44,500 के लेवल्स को ब्रेक किया था, जिसके बाद एक मंदी का सेल ऑफ वाला माहौल था। तो अगर बैंक निफ्टी की सपोर्ट्स की बात करें तो 43,000 से लेके 42,800 ये निचली स्तर पर लेवल है जहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज के लेवल है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी की जो जर्नी है शायद कहीं ना कहीं 43,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। आखिर में एक सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जो कल हमने देखा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो सेगमेंट में काफी अच्छे सारे मोमेंटम देखने को मिले, खजारिया, सिरामिक, टाइटंस और वोल्टास, तो ये तीनों ही स्टॉक हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। तो किसी भी क्लाइंट को इसमें पोजिशनल ट्रेड भी लेना है तो हमें लगता है कि इसमें एक अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में फोकस रखें आज के दिन के लिए, तो इसमें ट्रेडिंग बेट और पोजिशनल बेट दोनों ही लिया जा सकता है। तो यही थे कुछ मॉर्निंग अपडेट्स। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द मॉर्निंग कॉल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।